Hello learners, I am here again with the explanation of the chapter Ranikhet's Gift from the book The English Channel from class 7. As you all know, Ranikhet is a beautiful hill station very far away from the crowded metro cities. It has its own beauty and splendid, magnificent nature. This chapter is written by Rudrani Ghosh. The author of the chapter is Rudrani Ghosh, and she spent most of her time of her life in Indian cities, crowded Indian cities. But after some time, she planned to reside in Ranikhet, and she was overwhelmed with the beauty of Ranikhet. So, in this chapter, she is explaining her experience of Ranikhet. Now, I'm starting to explain this chapter. The dull light on the frosted glass of the door heralded a new day. The dull light on the frosted glass of the door heralded a new day. Means frosted glass is a glass through which you cannot see clearly, and heralded is approached. When in the hill stations we get up, or sometimes it is appearing to rain and it is becoming chilly outside, we can see the window panes, some little bit frosted. We are not able to see them clearly. And the new day was beginning. A peak outside presented the picture of an overcast sky with tall looming pines standing motionless awaiting the attack from above. Attack from above, as the word suggests. From above we are hearing we are expecting the rainfall, and the sky was full of clouds, and there were tall pine trees which were standing motionless, and they are waiting for rain. A gust of wind followed by a clap of thunder unleashed the rains, and down it came with full ferocity. Gust of wind is a speed mentioned. This word is the mentioning the speed of the wind, and it was from the clouds were releasing rains. Rains was pouring with its full speed. The monsoons had arrived in Ranikhet. Monsoon start हो गई थी रानीखेत में. It was a wonderful sight, the water gushing and gurgling down the slope, the trees swaying and the leaves dancing in mirth to accompaniment of the now roaring wind and the orchestral din of the pounding rain on the tin roof of our bungalow. Now the author is describing what a wonderful sight it was when the water was gushing. It was flowing in large quantity. It means it was a heavy rainfall, and the sound of water was like gurgling, the narrow escape of water from the hills towards the city. The trees were swaying, and the leaves of the trees were appearing dancing in happiness. Also, the roaring sound of the wind could be heard, and there was a loud noise when the raindrops were hitting the tin shed of the bungalow. It was like a pounding sound, pounding rain on the tin roof of our bungalow. We had to dive inside for our woolens and socks. Basically, she is describing the scene of the hills, and we know that even when in the summer season, when it is very hot in cities, it is quite cool on the hill stations. So, the author has to run inside to wear woolens and socks. The noise grew louder and louder as white marbles of hail came dashing down to the earth, covering the lawn in white gravel. Hails, ole, frozen rain. धीरे धीरे ओले गिरने लगे. Frozen rain, pieces of small frozen rains were coming from the sky, dashing towards the earth, and the lawn of the bungalow was covered with white gravel, white hails.
It rained incessantly for a couple of hours, and then a sudden calm descended over the hills. Continuous rain. Incessantly continuous rain. The distant mountains could no longer be seen, and neither was the winding pathway at the foot of her hillock visible. Author is explaining the distant mountains. जो भी mountains बहुत दूर थी उसके बंगलों से, she was not able to see, and neither the pathway, जो रास्ता था, जो bends और curves थे उस रास्ते पर, वो भी उसको नजर नहीं आ रहे थे. The temperature had dropped considerably, and the clouds had come down from their heavenly abode to visit us. She is explaining the nature, she is explaining the beauty of the nature. ऐसा लग रहा था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया, ठंडा हो गया, चिल्ली हो गया, और क्लाउड्स अपना हेवनली एबोर्ड, अपना घर, अपना स्वर्ग छोड़कर दे हैव कम डाउन टू अर्थ to visit the author, to visit the people living in Ranikhet. I opened wide our main door, and to my great delight witnessed a lady cloud floating into the house in her flowing gossamer gown, caressing our face, neck, and hands with her cool, moist touch. Wonderful explanation by the author. She is saying lady cloud floating. She is using the adjective lady cloud floating. ऐसा लग रहा था कि कोई lady cloud float करके उनके हाउस में एंट्री ले रहा है, बहुत सुंदर, बहुत फाइन, बहुत शाइनिंग गाउन में, एंड caressing our face, उनके फेस, नेक, हैंड्स को बहुत जेंटल टच दे रहा है with her cool moist touch. Gradually the haze started disintegrating. तेज बारिश हुई, तेज तूफान कह लो, तेज तूफान था, ओले भी पड़ रहे थे, तो जो हेज थी, जो धुंध थी, थोड़ी देर के बाद डिसइंटीग्रेट, ब्रेक होना स्टार्ट हो गई, छटना शुरू हो गई इनटू स्मॉल पीसेस, एंड द फर्स्ट ग्लिंट ऑफ द सन्स रेज शिमर्ड ओवर द वेलवेटी ग्रीन माउंटेन साइड व्हाइल द डार्क क्लाउड्स स्कर्रेड अवे. अचानक क्या होता है, सन की रेज चमकने लगती हैं वेलवेटी ग्रीन माउंटेन साइड पर. माउंटेन्स पर जो ट्रीज थे वेलवेटी अपीयर हो रहे थे, ग्रीन वेलवेट की तरह, और तेज बारिश आने के बाद वहां पर वो सब बिल्कुल क्लीन हो गए थे, कोई डस्ट नहीं थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे सनरेज आई वैसे द क्लाउड्स हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द sky from their heavenly abode, from where they have come in a hurry. What a drastic change! Extreme change tha bilkul hi. Now a brilliant blue sky emerged with contrasting startlingly white fluffy clouds. स्काई का कलर ही चेंज हो गया. पहले बहुत तेज बारिश आई, हेल स्टॉर्म हुआ, उसके बाद सनलाइट आ गई, और जो स्काई था वो चमकने लगा फ्लफी क्लाउड से. इट वॉज एन आर्टिस्ट डिलाइट विद ऑल दो शेड्स ऑफ ग्रीन फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट एंड फ्लावर्स ऑफ एवरी ह्यू एंड कलर. आर्टिस्ट अगर कोई पेंटिंग ड्रॉ करता है, नेचर का सीन दिखाता है, हिल साइड का सीन दिखाता है, बहुत सारे कलर्स वो यूज करता है. ऑथर ने भी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर आर्टिस्ट से कंपेयर करा है. On the hilly slopes between the rocky crevices and in the every garden there were splashes of red, crimson, yellow and orange. हिल स्लोप्स पर जो रॉक्स थे उनके बीच में जो ओपनिंग्स थी, रॉक्स के बीच में, गार्डन्स में, बंगलों के गार्डन में, लोगों के घरों के गार्डन में, इवन हिल्स के जो रॉक्स थे हिल्स पर, उनके अंदर जो ओपनिंग्स थी, रेड, क्रिम्सन इज टाइप ऑफ ऑरेंज कलर, येलो, ऑरेंज colors के flowers were blooming. The air was cool and crisp. हवा बहुत ठंडी थी. And the birds and the butterflies were out again. और वापस से birds और butterflies जैसे ही rainfall stop हुआ, rain pouring stop हुई, वो वापस से आ जाते हैं. We too went out for our daily walk. Amazingly, there was to be found neither a puddle nor a muddy patch.
We all know we are living in a metro, we are living in crowded cities, और जब भी यहाँ पर रेन pouring होती है तो थोड़ी देर के बाद पुडल्स हो जाते हैं, गड्ढे पानी से भर जाते हैं कीचड़ वाले. बट हिल्स पर जब भी बारिश होती है तो बिल्कुल जो रोड्स होती हैं नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि सारा का सारा हिल्स पर से जो वाटर होता है डाउन पोर हो जाता है स्लोप्स पे से नीचे. तो कोई भी पुडल, कोई भी गड्ढा, कुछ भी नहीं दिखता, कोई मडी पैच नहीं नजर आता. बहुत सुंदर हो जाता है पूरा का पूरा एनवायरमेंट. द सॉइल बीइंग रॉकी एंड सैंडी ईदर ड्राइड इजीली और द वाटर मेड इट्स वे डाउनहिल. ये मैंने आपको अभी बताया है. Now that the sky had cleared, the whole mountain range was in a view. A full 180-degree stretch of snow-clad mountains gleamed and glistened in the last rays of the sun. Beginning हुई थी चैप्टर की मॉर्निंग से, उसके बाद आफ्टरनून आया, बारिश हुई और हेल स्ट्रॉम हुआ, फिर सनलाइट आई. अब डे एंड हो रहा है धीरे धीरे. बीच में क्या हुआ था, जब तेज बारिश आई, तेज ओले पड़े, तो हमें जो बंगलो था ऑथर का, उससे सामने का व्यू जो माउंटेन्स का था उसको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था. बट धीरे धीरे जैसे स्काई क्लियर हुआ तो उसके घर के सामने वाली माउंटेन्स उसको, उनका व्यू उसको मिलने लगा. We stood mesmerized as the reflection of the setting sun, sunset हो रहा है, evening का time हो रहा है, on the snow seems to set the whole range ablaze. Mesmerized जैसे magical, to fix one attention, देखते ही बनने वाली बात. आंखें जैसे कि बिल्कुल उस दृश्य को देखने के लिए बहुत देर से उत्साहित थी, देख रही थी. The orange glow began to spread and smeared itself on the surrounding clouds, slowly yet steadily mingling with the darkness at night gradually let down her curtains. Orange glow जो sun का था धीरे धीरे spread होने लगा सराउंडिंग्स में, स्काई में, पेड़ों के पीछे, माउंटेन्स के पीछे, और कर्टन्स आ गए. किसके कर्टन्स आ गए? नाइट के. वो जो कलर था ऑरेंज कलर मिक्स होने लगा डार्कनेस के साथ. मीन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली नाइट हैज कम. वी हरिड होम टू फाइंड देयर वाज अ पावर कट. वो अपने घर में एंटर करा उन्होंने, तो उन्होंने देखा पावर कट हो गया था. इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज ओले पड़े. तो यहाँ पर भी आप देखते हैं जब आप अपने घर में होते हैं, तेज बारिश आती है तो पावर कट हो जाता है. सेम सिचुएशन हिल्स पर भी थी, वहां भी पावर कट हो गया था. और जब ठंडा मौसम होता है, बारिश होती है, तो क्या पीते हैं हम? कॉफी, टी, ये पीने का हमारा मन करता है. सेम विद द ऑथर. आफ्टर अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी इन कैंडल लाइट नहीं थी तो कैंडल उन्होंने लिट करी. वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बंगलो टू चेक द पावर सिचुएशन. कैंडल लाइट में उन्होंने कॉफी बनाई, कॉफी पी उन्होंने, और उसके बाद वो अपने बंगलो से बाहर आते हैं पावर सिचुएशन को चेक करने के लिए. एंड व्हाट अ मैग्निफिसेंट साइट अवेटेड अस. रात के अंधेरे में इतना सुंदर दृश्य, इतना मैग्निफिसेंट साइट था जो उनके लिए वेट कर रहा था. इट वॉज द डार्केस्ट ऑफ डार्क नाइट्स, एरी पिच ब्लैक. A creak or a crackle made one jump, but when we looked up, we stood transfixed in awe, looking at the star-spangled dark dome above. इतना अंधेरा था हिल्स पर, वो देखकर, उस सन्नाटे को देख करके डर गए वो लोग. एरी, फ्राइटनिंग. और छोटी सी आवाज भी उस साइलेंस में, उस अंधेरे में उनको डरा रही थी. पर जैसे ही उनकी आंखें स्काई की तरफ गई, they were unable to move. The sky was looking magnificent. The dark black sky was full of stars. सिटी में, मेट्रोज में, यहाँ पर नाइट स्काई में भी बहुत मुश्किलों से स्टार्स नजर आते हैं, पर हिल्स पर वो जो रात का समय था वो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. Never ever had we seen a million brightly lit stars and at such
close quarters. We just had to stand on our toes to touch them. हिल्स पर थे, उन्हें ऐसा लग रहा था वो स्काई को टच कर सकते हैं, स्टार्स को टच कर सकते हैं. ऑथर रुद्रानी घोष और उनकी फैमिली बहुत खुश हुए उस मैग्निफिसेंट सीन को देख करके. बहुत ही सुंदर स्काई लग रहा था. ऐसे लग रहा था मिलियंस ऑफ ब्राइटली लिट स्टार्स स्काई में हैं. इन द सेलेस्टियल ऑरा and the ethereal beauty of the surroundings, the tumult of emotions within was hard to express. Only a soft thank you escaped my lips. Heavenly surrounding. And it was, the author was feeling it was unworldly. इस दुनिया से हटकर कोई और दुनिया. और एक ऑरा होता है जो मेडिटेशन करते हैं, उनकी बॉडी के आसपास एक वाइट ऑरा आ जाता है. वो ऑरा वो फील कर रही थी उस ब्यूटी के अंदर. और कंफ्यूजन हो रहा था ऑथर को, जो कि बहुत मुश्किल था उनको एक्सप्रेस करने के लिए. जस्ट अ सॉफ्ट थैंक यू उनके लिप से एस्केप हुआ. उन्होंने नेचर को थैंक करा कि वो अपनी लाइफ में इतनी सुंदर ब्यूटी देख पाई, क्योंकि हमेशा से वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसी सिटीज में उन्होंने रिसाइड करा. बट एट दिस मोमेंट शी वॉज रिसाइडिंग इन ब्यूटिफुल लोकेशन, दैट इज रानीखेत. सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.